अ वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू EWAS। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आज की इस शानदार मॉक टेस्ट सीरीज में, जो कि हम लोग पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। जो भी साथी आ गए हैं एक बार कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहले आप लोग अपना ऐप को ओपन कर लिया करें और वहां पर आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाता है। यदि आपने एक से ज्यादा कोर्सेज परचेज किए हैं तो सी ऑल में कर दें। वैसे नोटिफिकेशन तो आ ही गया है। चलिए बताएंगे कौन कौन से साथी हैं, एक बार कमेंट करिए भाई। Which of these poems were a preface by Leigh? कौन सी वो पोएम है जिसका प्रीफेस ले हंट के द्वारा दिया गया? MASQUE, मास्क ऑफ अनार्की। ऑप्शन ए राइट, वेरी गुड, बहुत अच्छे अजय जी। नेक्स्ट, which work of Shelley carries an epigraph on the cover of the first edition from the Revolt of Islam 1818? Hope is strong, justice and truth their ringed child have found. 52 रेस्पॉन्ड करेंगे तेजी से जवाब करेंगे। द राइट आंसर इज द मास्क ऑफ अनार्की। ऑप्शन ए राइट, माय होम बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं। द मास्क ऑफ अनार्की फॉर द मास्क ऑफ अनार्की और द मास्क ऑफ अनार्की दोनों स्पेलिंग है। इज अ ब्रिटिश पॉलिटिकल पोएम बेस्ड ऑन, किस पर आधारित है? पेटरलू मैस्कर, द वार ऑफ रोजेज, 100 Years War, फ्रेंच रेवोल्यूशन। 53 पेटरलू मैस्कर, ऑप्शन ए राइट, मैस्कर सामूहिक नरसंहार। In 1941, a comic play, Blood Spirit by Noel Coward, takes its title from the opening line of Shelley's poem Hail to Thee, Blood Spirit, Bird Thou Never Read. The line is from To a Skylark, option A। चलिए नेक्स्ट, in which poem of Shelley do the following lines occur? Oh, life me as a wave, a leaf, a cloud, I fall upon the thorns of life, I bleed। ये लाइन कहां से ली गई है? 55 नंबर में आप जवाब करें। द मास्क ऑफ अनार्की, सॉरी, ओड टू द वेस्ट विंड, यहां पर ऑप्शन ए राइट है। ओड टू द वेस्ट विंड, बहुत अच्छा जवाब। The red letter days now become to all intents and purposes dead letter days. These lines are from 56 Oxford in the Vacation, option A right। Next, the human species, according to the best theory I can form of it, is composed of two distinct races, the men who borrow and the men who lead. These lines are from
The two races of men. Option A right. Your borrowers of books, these multi letters of collections, spoilers of the summary of selves, and creator of odd volumes. These lines are from 58. The two races of men. Option A right. Next, I conceive disgust at those impertinent and misbecoming familiarities inscribed upon your ordinary tombstone. In the meantime, I am alive. I move about. I am worth 20 of the. No, they betters. The lines are from New Year's Eve. Option A right. Next, I have no ears. Sentimentally, I am disposed to harmony, but originally, I am incapable of a tune. These lines are from 60 number बोलिए. Old China. B option. John Gibson Lockhart wrote in Blackwood's magazine describing a work of Keats as imperturbable, imperturbable, derive, driveling idiocy with biting sarcasm. Lockhart advised, it is a better and a wiser thing to be a starved apothecary than a starved poet. So back to the shop, Mr. John. Back to plasters, pills, and ointment boxes. The work was 61 Endymion. बहुत ही पॉपुलर वर्क है. ऑप्शन डी राइट. Which magazine coined the defamatory term the Cockney School for Hunt and his circle, which included both Hazlitt and Keats? कौन सी मैगजीन है? 62 में जवाब करेंगे. Lockhart's in Blackwood's magazine. Option A right. To some of his contemporaries, he appeared as a member of the Cockney School of English Poetry. Who is he? 63. Keats. Next. The critics opined one of Keats' works as a sense of practice disgust and a Don Juan style of mingling of sentiment and sneering, concluding it was a poem unfit for ladies. The work was Saint Agnes. Option A right. Who was Endymion? 65. 65 नंबर में हमारे साथी मेजॉरिटी एकदम ए के साथ जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है. द ब्रेन सिक शेफर्ड प्रिंस ऑफ माउंट लेटविस. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि यहां पर सही जवाब क्या है. 66. बहुत ध्यान से जवाब करेंगे.
Which work of Dickens presented an accident that involves a terrible collision between two trains in the tunnel? Dickens may have based this incident on the Clayton's tunnel crash that occurred in 1861. 66 नंबर जवाब करेंगे सभी साथी। कुछ साथी बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, द सिग्नल मैन, और ये जवाब एकदम सही है, राइट। This novel of Dickens takes place primarily in London and Paris in the latter half of the 18th century. It spans a time period of roughly 36 years, with the chronologically first events taking place in December 1757 and the last either late 1793 or either 1794. The novel is, अब जैसे ही यहाँ दो शहरों का जिक्र है तो याद है अ टेल ऑफ टू सिटीज, बिल्कुल। A Tale of Two Cities opens in 1775. Which of the following does not characterize this period? The British colonies in America have just presented a list of grievances to the King of England. Crime and capital punishment plague the streets of London. The guillotine stands as a much feared fixture on the streets of Paris. The French aristocracy causes great suffering among the lower classes. 68 सभी साथी बोलेंगे यस, सी ऑप्शन राइट होगा। द guillotine stands as a much feared fixture on the streets of Paris. Why are the drivers of the Dove Mail coach hesitant to stop for Jerry Prencher's message? It's your time. 69. Option A. They fear that he is a highwayman attempting to rob the passengers. The object Dutch Dr. Manet keep during his imprisonment in order to escape in spirit. A lock of his wife's hair. Option D right. Of love that never found his earthly close. What sequel the above lines are taken from? 71. Love and Duty. Option A. The woods decay and fall, the vapor sweeps their birth into the ground. Man comes and till the field and lies beneath. And after many a summer dies the swan, the lines are taken from. Tithonus, option C, right. बहुत अच्छा. Love lies deep, love dwells not in deep depth. Where love could walk with vanished hope no more. 73. A Lover's Tale, option A, right. The poet in a golden clime was born with golden stars above, dovers with the hate of hate, the scorn of scorn, the love of love. The above lines are taken from 74. The poet, option A. Death is the end of life. Ah, why should life all ever be? The above lines are taken from The Lotus Eaters. Option D, right.
My argument is that war makes rattling good history, but peace is poor reading. The the Dinesh part second. Option A. To find beauty in ugliness is the province of the poet, who said, Hardy. What, according to Gabriel Oak, is Bathsheba Everden's fault in the first chapter? 78. Vanity, B option. Why does Bathsheba take Gabriel Oak back after she fires him? 79 में जवाब करेंगे. सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है. Her sheep eat clover with which causes their stomach to expand dangerously, and he is the only one who knows how to save them. She realizes she cannot do without him. How does Gabriel Oak lose his farm? 80 number. His younger dog chases all the ewes of a precipice, thinking he is dutifully herding them. D option. Arnold's work as a literary critic began with the 1853 preface to the poems. Who described Arnold's preface to the poems as oddly stiff and graceless when we think of the elegance of his later prose. George Watson, option A. Arnold's lectures on translating Homer were published in 1862. Option C right. Arnold's last words on translating Homer published in 1862. In which essay Arnold wrote that without poetry our science will appear incomplete and most of what one passes with us for religion and philosophy will be replaced by poetry. The study of poetry, option A right. Who has written the book The Art of T.S. Eliot? 86. Helen Gardner. Who referred to T.S. Eliot's style as a poetic South End. Southend. 87. I. Richards. Which of T.S. Eliot's poem is based on musical pattern? Four quartets. 88 A option. Who is of the opinion that complexity of modern poetry is the result of complexity of the modern life?
T.S. Eliot. A. Right. In which essay has T.S. Eliot put his views on the impersonality of poetry and the poetic process? Tradition and the individual talent. It begins in delight and ends in wisdom. The figure is the same for love. No tears in the writer, no tears in the reader. Read it 100 times, it will forever keep its freshness as a metal keeps its fragrance. It can never lose its sense of a meaning that comes unfolded by a surprise as it went. The lines are from. The figure a poem makes. Option A 91. Some poor fool has been saying in his heart glory to out of death in life and art. The lines are from. Dedication. Option A right. In 3 words, I can sum up everything I have learned about life. I goes on. Who said it? Robert Frost. Such was life in the Golden Gate. Gold dusted all we drank and ate, and I was one of the children told we all must eat out peck of gold. ये लाइन कहां से ली गई है? 94 नंबर में जवाब करेंगे सभी साथी. A peck of gold. Salice de Lewis observes that the simplicity of his was in the simplicity not of nature but of so serious and profoundly critical spirit. 95. Robert Frost. I do not believe that all the sermons, so called, that I have been preached in this land put together equal to it leaves of grass for the preaching. These lines are by Thoreau. Option B. Kinship means 97. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएं थोड़ा, देखते हैं कौन सही जवाब देता है. किथ एंड किन याद है ना, यानी रिश्तेदार, रिश्ता, रिलेशनशिप. यस, बहुत अच्छा जवाब. हैविंग अ फीलिंग ऑफ गिल्ट, relic, remorse, free, respite. रिमोर्स यानी पश्चाताप, गिल्ट का भाव होना. बी ऑप्शन. A nignog means a fool, good man, beautiful lady, erotic. 99. A nignog का अर्थ बताएंगे. मूर्ख. A fool. 100. एडम सेल का मतलब है कॉमन वाटर. और 101 में चलने से पहले एक क्वेश्चन थोड़ा सा हटके देखें कि पुराना रिवीजन कर रहे हो कि नहीं. देखो, अगर हम नारायण की बात करें तो इन्होंने एक वर्क लिखा है और उसका नाम है लॉस्ट चाइल्ड. अब ये नारायण का क्या है ये आपको बताना है. ऐसे है, शॉर्ट स्टोरी है, क्रिटिकल वर्क है या नॉवेल है? बताइए. लॉस्ट चाइल्ड जो कि नारायण का है, आर के नारायण का. एनी वन ऑफ यू?
बहुत अच्छा जवाब अजय जी, बहुत अच्छा जवाब। शॉर्ट स्टोरी बिल्कुल सही जवाब है, शाबाश, वेल डन, आई लाइक इट। I love you and respect you very much, but I will you dead before this day ends. Santiago speaks this too. सैंटियागो ने ये बात किससे कही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन दिन खत्म होने से पहले तुम्हें मार भी दूंगा। द फिश। One battle does not make a campaign, but critics treat one book, good or bad, like a whole uh, goddamn war. Who said it? Hemingway. Bulls does not run reviews. Bulls of 25 don't marry old women of 55 and expect to be invited to dinner. Bulls do not get you cited as responded in society. Divorce trials. Bulls do not borrow money. Bulls are evil after they have been killed. These lines are from Hemingway's letter about why bulls are better than literary critics. Whom did Hemingway write it? 03. Ijra Pound. Poetic composition, according to Wordsworth, takes place in stage. 4 stage. कमला दास died in the year 2009 है कि 2004 है, इसी में ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। 2009। मुल्क राज आनंद फादर वॉज अ क्लर्क इन, कहाँ थे? पोस्ट ऑफिस, बैंक, आर्मी या नेवी? तो उनका डिसिप्लिन देख करके आपको याद होगा, द आर्मी। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज अ पोएम बाय 07 निसिम इजैकिल। आर के नारायण wrote how many novels? 15 novels. In the novel Untouchable, Bakha's sister is, बाघा की बहन का नाम क्या है? सोहिनी। An indirect or usually malicious implication is known as comment, criticism, satire, innuendo. Innuendo. 11 number. A tattered coat upon a stick is an instance of. 111 में बोलिए, इसका उदाहरण है मेटाफर। Identify the figure of speech in the following line. The fire of passion made him blind. अब देखिए यहां पर कह रहा फायर ऑफ पैशन, यानी तीव्र इच्छा को फायर से कंपेयर किया जा रहा है। मेटाफर। 13. I see a lily on thy brow, pale with anguish. The figure of speech is. थर्टीन नंबर में मेटाफर राइट आंसर है। He looks smart though he is in the sunset of his life. यहां पर भी मेटाफर का उदाहरण है। नॉम डे प्लूम इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेन नेम। नेक्स्ट, लॉन्गिंग फॉर समथिंग पास्ट इज, बोलेंगे 16 नंबर में।
भूतकाल नॉस्टैल्जिया, उसकी याद करते रहना। ऑल इन मीन्स, अगर कोई कहे आई एम ऑल इन तो क्या मतलब हो? एकदम थके चूर, एग्जॉस्टेड। A drama set to music consists of singing with orchestral accompaniment and an orchestral overture and interludes. 18 नंबर। क्या कहते हैं ऐसे ड्रामा को? ऑपेरा। A formal expression of praise. Panegyrics, option A right. A composition that imitates somebody's style in a humorous way. Parody. Parody is the right answer. Option C. Which novelist is respected as the greatest master of irony? 121. Jane Austen. Next. Irony is basically connected with 122 में जवाब दीजिए। बहुत अच्छा आंसर। भले ही संख्या कम है लेकिन जवाब अच्छे आ रहे हैं। 122 में आप बताएंगे ड्रामा इज द राइट आंसर। यस। Which novel can be respected as a greatest work of irony? बोलिए। Pride and Prejudice. Which novelist among the following has vividly described irony? किसने? जोनाथन स्विफ्ट। ऑप्शन सी राइट। Gulliver's Travels is famous for its irony. थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। सभी का शुक्रिया। कल हमारी रवानगी है घर के लिए। सो अब हम लोग 1 वीक क्लास ऑफ रहेगी और नेक्स्ट यानी दिवाली के बाद संडे को वापसी होगी और मंडे से क्लासेज रिज्यूम की जाएंगी। तब तक अपना ख्याल रखें, रिवीजन करते रहें, अच्छे से त्यौहार मनाएं और खुशियां बांटें और खुश रहें। जी क्या करें अजय जी? एग्जाम को लेकर के पहले ये था कि अध्यक्ष आ जाएं, फिर अध्यक्ष आ गए तो परीक्षा नियंत्रक आ जाएं, वो भी आ गए, तो फिर कुंभ और बोर्ड परीक्षा। और वैसे भी हमारी चर्चा हुई थी तो हमने कहा भी था कि अगर अक्टूबर में डेट नहीं आती है यानी कि नवरात्रि तक, तो समझिए कि परीक्षा नेक्स्ट ईयर जाएगी। ये स्वाभाविक है मन ना लगना, लेकिन थोड़ा थोड़ा लगाते रहिएगा, नहीं तो जो चीजें आती हैं फिर वो भी भूल जाएंगे। थैंक यू, गुड नाइट। 9 PM क्लास में आइए, वहाँ पर सभी साथी रहेंगे और थोड़ा सा अपना असेसमेंट करिए। I wish you all happy Diwali in advance.